ओके सो नमस्कार ऑल ऑफ यू। तो काली क्लास रे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स टा देखिथिलु रेस्ट टेस्टर। तो आज हमें देखिबा रेस्ट टेस्टर जोटा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ओके सेक्शन 4 ओके आउ इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 6 ओके। सो किछिटा तार एक्सेप्शंस देखिबा माने को केस रे आपनकर क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स किंबा रेस्ट चेस्टा ର କନେକ୍ସନ ଟା ରହିବନି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସେପସନ୍ସ କହିପାରିବା। ଓକେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। କିଛିଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ଲସ୍ ଦେଖିବା, ଇଂଲିଶ କେସ୍ ଲସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କେସ୍ ଲସ୍। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଠିକରେ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ। ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଏଜେଣ୍ଡା ଫର ଟୁଡେ ରାଇଟ୍। ସୋ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲୁ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଓକେ or characteristics of REST system. So next heading upon lekhantu exceptions and limitations of REST system. Okay, I think there's seeing some issues with my pen tablet, but let's try again.
exceptions and limitations, okay, of REST system. ঠিক আছে, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର exceptions ଆଉ limitations ଅଛି, exceptions and limitations of REST system. ତ first तो obviously सेटा ଆମେ characteristics ରେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଠିକ ଅଛି। जो characteristics ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା जो time gap ରହିଥିବ between the incident and between the statements, okay, तो बेसी टाइम गैप रहिबा कथा नो, एते टाइम गैप रहिबा कथा नो कि जने भाबी कि किछि मैनिपुलेट करि परिबो, ओके। सो टाइम गैप which allows manipulation or fabrication, जने भाबी कि कोन ओटे कहि दबो सेते बळे, ओके, सेति कि टाइम गैप रहिबा कथा नो। जोटा हमें स्पॉन्टेनिटी कहउछु, जोटा इंसिडेंट हला इमीडिएटली जने कोन कोन कहउछु रिफ्लेक्स एक्शन बढिया, सेटा रेस्ट स्टैंडर्ड रे जाउछु। बट जदी टाइम गैप एमिति अछि जोठी की मैनिपुलेशन की फैब्रिकेशन रो पॉसिबिलिटी अछि, ओके, ताहले रेस्ट स्टैंडर्ड रे ताकू एडमिसिबल सेटा न होई पारे, ओके। सेक्शन 4 ऑफ बीएसए और सेक्शन 6 ऑफ आईए अंडर सेतराउ क्लोजली कनेक्टेड सेटा हबन, ठीक अछि। सो हेडिंग दियंतु एक्सेप्शन लिमिटेशन अंडर रे फर्स्ट एक्सेप्शन और लिमिटेशन रे टाइम गैप अलाउइंग फैब्रिकेशन, time gap allowing fabrication. Time gap allowing fabrication. Okay. So तार गोटे लाइन ता ऊपर लिखंदु, if there is a significant time lapse, if there is a significant time lapse, if there is a significant time lapse between the event and the statement, between the event and the statement, between the event and the statement, such that it allows, between the event and the statement, such that it allows for potential fabrication, such that it allows for potential fabrication, the statement may not be admissible, the statement may not be admissible under REST system. The statement may not be admissible under REST system. Okay. तो टाइम गैप बेसी रहिबा कथा नुह, एते रहिबा कथा नुह कि जने भाबी की किछि मैनिपुलेट करी की फैब्रिकेट करी की तापरे आसी की कहब, ओके। सेकंड सेकंड एक्सेप्शन और लिमिटेशन रे लिखंतु लैक ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन, एटा भी कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें देखिथिलु दैट इट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड, ओके, लैक ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन, so take down that. लैक ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन लिखंतु से लैक ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन माने कोन,
मेन इवेंट हला कि जो इंसिडेंट हला कि ताको हम ट्रांजैक्शन भी कहि परिबे ता सहित जदि कोनोसी डायरेक्ट आउ इमीडिएट कनेक्शन नाही ओके ताहले रेस्ट जेस्टा सेठी एप्लीकेबल हबनी ओके सो टेक डाउन statements that do not have a direct and immediate connection statements that do not have a statements that do not have a direct and immediate connection to the main event or transaction to the main event or transaction may be excluded as they do not form part of the same transaction may be excluded as they do not form part of the same transaction do not form part of the same transaction okay तापरे पॉइंट नंबर 3 को जानबो लिमिटेशन नंबर 3 किबा एक्सेप्शन नंबर 3 सेटा भी हमें देखथिलु कि रेस्ट जेस्टा एप्लीकेबल हबो कि नहीं फाइनल अथॉरिटी किए कोर्ट डिसाइड करिवे सेटा ऑलमोस्ट सब कांसेप्ट रे एटा आसीबो এই পয়েন্টটা সব आंसर রে থাকে এক্সেপশনস রে কোটা জুডিশিয়াল ডিসক্রিশন ओके सो पॉइंट नंबर 3 रे लेखंतु जुडिशियल discretion माने फाइनली कोर्ट विल डिसाइड that whether it will come under section 4 of BSA or section 6 of IEA okay so judicial discretion okay ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇପାରେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓକେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ନବା କଥା ନୁହଁ ତ ସେ ତାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବେନି ଓକେ ସୋ ଟେକ୍ ଡାଉନ୍ the admissibility of res gesta evidence the admissibility of res gesta evidence often the admissibility of res gesta evidence often rests on judicial discretion often rests on judicial discretion considering often rests on judicial discretion considering factors like considering factors like the nature of the event considering factors like the nature of the event को टाइप रो इवेंट सेटा को टाइप रो इंसिडेंट हला ठीक अछि सेथरे यू नो ताको रेस्ट जेस्टा हिसाब रे आपण नै परिबे कि नै ओके एविडेंस टाको comma like the nature of the event comma the spontaneity of the statement the spontaneity of the statement and the context in which it was made the spontaneity of the statement and the context in which it was made बुझिपारे सो एगुड़ा है एक्सेप्शंस आउ लिमिटेशंस तीनटा पॉइंट हमें देखलु राइट सो जस्ट गो थ्रू इट एनी डाउट्स टिल दिस मच ताले पचरंतु एक्सेप्शन और लिमिटेशन रे कोन जदी डाउट अछि कि को जगह रे रेस जेस्टा एप्लीकेबल न ही पारे ओके को जगह रे रेस जेस्टा एप्लीकेबल न ही पारे देखि दियंतु एटा डी एंड देन टेल मी
Any doubts regarding this? No? ठीक है ताहले नेक्स्ट को चला दो. So now we will go to the landmark case laws. एटा हिस्ट्री रे काली जे आपण पढिथिले और नोट रे लिखिथिले मन रखंतु. तर यदि हम हिस्ट्री टा देखिबा ताहले हिस्ट्री रे हमें फर्स्ट देखिलु एटा इंग्लैंड रो आसी. तो इंग्लैंड रो जदि हमें देखिबा तार जो सब केबे आस्तिला इफ यू रिमेंबर लेट 17th सेंचुरी रे. ठीक अछि लेट 17th सेंचुरी काली हम लिखथिलु मोर एग्जैक्टली मने पड़नी 1693 ना 97 कहरे थिला सेबेटू प्रथम केस टा हमें रिकॉर्डेड केस टा जानिया पे पाउछ. तो लैंडमार्क केस उडा ओके सबू दीटा लैंडमार्क केस हमें देखिबा गोटे आर वर्सेस बेडिंगफील्ड आ गोटे आर वर्सेस एंड्रयूज ए दीटा इंग्लिश केस लॉ. ओके तापरे इंडियन केस लॉ जदि हमें देखिबा तो गोटे राव वर्सेस आंध्र प्रदेश सेटा गोटे इंपोर्टेंट अछि. ओके एंड देन सुकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ओके सो these are the four cases सेटा हमको देखिबार अछि. राइट सो फर्स्ट टेक डाउन केस लॉस इंपोर्टेंट केस लॉस चारिटी केस लॉ हमें देखिबा. ओके आर वर्सेस बेडिंगफील्ड. सो फर्स्ट लिखंतु तार केस समरी टा माने कोन बेसिकली केस या थिला कि यू नो जने लेडी से बाहर को आसिले आउ तांकर जने रिलेटिव की कहले कि बेडिंगफील्ड मते एमती मार देछ. राइट सो सेथरे इंग्लैंड रो कोर्ट ताकू टिके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नेले जो कॉन्सेप्ट हमें देखिथिलु कोन स्पॉन्टेनिटी रो. ओके तांकू लागिला कि एटा स्पॉन्टेनियस नुह आउ एथरे में भी किछि मैनिपुलेशन हेई थाई पारे. ठीक अछि सो सेथि पई कोर्ट एथरे गोटे स्ट्रिक्ट व्यू नै कि कहले कि नहीं एटा रेस्ट अंडर रे आसीबनी. ओके सो टेक डाउन आर वर्सेस बेडिंगफील्ड. सर फर्स्ट लिखंतु हां सर यार ईयर टा केते यार हैला 1879. ठीक अछि आर वर्सेस बेडिंगफील्ड 1879 तार फर्स्ट लिखंतु जो हमें जो फॉर्मेट रे देखुछु ना एफआईआर एस. सो फर्स्ट लिखंतु फैक्ट्स. Number one, the defendant Henry Bedingfield had a difficult relation had a difficult relationship with the deceased with the deceased. Okay तो बेसिकली कौन दिला ना
ତାଙ୍କ ରିଲେସନशिप ଟା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏରୁ ଓକେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନशिप ଟା ଏତେ ସ୍ମୁଥ ନଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ରିଲେସନशिप टाइप ର ଥିଲା ଓକେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଯିଏ ଡିସିଜ୍ଡ ଯିଏ ସିଏ पुलिस रे जाइकी केस भी करथिले आउ एई एप्रिहेंशन तांको रिलेटिव्स को संगे शेयर करथिले कि ये सब मते एमती थ्रेटन करूची आउ केतोड़ मते मारी देई पा ठीक है सो कंटिन्यू the deceased had previously expressed fear the deceased had previously expressed fear of Bedingfield Henry Bedingfield, okay, of Bedingfield due to his threats. ठीक है तो सेदिन कौन है ताले सेदिन तांकर गोटे सेमती झगड़ा है ओके आउ झगड़ा परे से दौड़ी की आसला बाहर को जे डिसीज जे ओके आउ ता बेकर गोटे डीप वुंड हेथिला ठीक है तो से बाहर आसिकी जे विटनेसेस थिले ता रिलेटिव्स करिया तांको कहला कि ये मते एमती ओके देखो बेडिंगफील्ड कौन करछि मते एमती से मार देछि व्हाटएवर से तारा कहला ठीक है so next point लिखंतु so facts रे on the day of the incident after a brief interaction with Bedingfield on the day of the incident after a on the day of the incident after a brief interaction with Bedingfield the deceased emerged from her house the deceased emerged from her house the deceased emerged from her house with a severe throat wound with a severe throat wound बेकर तार बहुत माने डीप गोटे गैश हो जायतिला कि गोटे यू नो वुंड हो जायतिला and allegedly made a statement implicating Bedingfield before dying of her injuries before dying of her injuries shortly thereafter dying of her injuries shortly thereafter माने से जहाँ स्टेटमेंट दवा कथा रिलेटिव को कहले बेडिंगफील्ड मते एमती कर देछि ओके तापरे ताकर डेथ हे गला ओके बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भीतर तो इगुडा हला फैक्ट्स इश्यूज को आसंदु the central question was whether the deceased statement made immediately after sustaining the fatal injury the deceased statement
made immediately after sustaining the fatal injury could be admitted as evidence under the res gesta exception could be admitted as evidence under the res gesta exception to the hearsay rule. Under the res gesta exception to the hearsay rule. Okay. So hearsay rule ro kichita hearsay mane रा कोडली सुना सुना है राइट निजे निजो सेंस रे आपण ये विटनेस जे निजो सेंस रे परसीव करनी जिंसरा ठीक है सुनी ची काटू राइट तो सेटा जनरली एक्सेप्टेबल नो किंतु किछिटा तार एक्सेप्शन अछि एटा गोटे हला रेस्ट टेस्टा डाइंग डिक्लेरेशन हमें देखिबा ठीक अछि तापरे हमें और भी केता अछि जेमति एक्सपर्ट ओपिनियन हे गला थर्ड पार्टी ओके ओपिनियन हे गला राइट सेगुडा सब दैट वी विल सी व्हेन वी गो टू दैट पार्ट ओके सो दैट वाज द लीगल इशू ये जो दौड़ी के आसला रूम रु तार बेक कटा हेतिला कि गोटे इंजुरी हेतिला जोर रे आउ द रिलेटिव की कहला ये एमती करची मो संगे बेडिंग फील्ड और तापरे शॉर्टली देयर आफ्टर द डेथ हे गला ये जो आसी कहला स्टेटमेंट ता ओके सेटा रेस जेस्टा अंडर रे एक्सेप्टेबल हबो कि नै एडमिट ताकू करया हे परिबो कि नै काहे से दौड़ी के आसी रूम केतो बळे एटा हेतिला सेटा के देखि ना ओके सो जे चीफ जस्टिस थिले सेतबळे चीफ जस्टिस कॉकबर्न सीए गोटे पूरा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नेले केडा स्पॉन्टेनिटी नथिला से जदी अन्य माने के देखि दांदे कि से जदी मारिला ताकू छुरीटा जहा भी ता बेकड़ा कटला सेति कोले से कहला तुमे एमती काई कलो ओके ताहले गोटे अलग कथा थला सीए भी दौड़ दौड़ी आसुची रूम रु ओके आउ आसिकी ता रिलेटिव की कोच ताने किछि टाइम गैप थिला सेत between this incident that is stabbing of her neck and her giving the statement there was some time ତେଣୁ ଯିଏ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ କକବର୍ନ ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନେଲେ ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସଟାକୁ ବହୁତ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହୁଏ ଆକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ ବି କରାହୁଏ ଓକେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ନେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଣ ନା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ ରେ କରାହବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରେ ଦିଆହଉଛି ସେଟା ଜେନେରାଲି ଠିକ ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା ସେଠି ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ ସେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ କିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ଆସିଗଲା କିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲା କିଏ କଣ କଲା ତ ସେ ଓକେ ରେସ୍ ଚେଷ୍ଟା अंडर ରେ ଯିବ राइट सो नेक्स्ट टेक डाउन रूलिंग कोर्ट कौन रूल कले रूलिंग द कोर्ट presided over by Chief Justice Cockburn the court presided over by Chief Justice Cockburn COCKBURN the court presided over by Chief Justice Cockburn ruled that the statement was inadmissible ruled that the statement was inadmissible सर चीफ जस्टिस कौन कहले Cockburn 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 okay name of the Chief Justice जे प्रिसाइड करथिले एटा एका तांकर डिसीजन नथिला अन्य माने भी थिले बट ही वाज ओके प्रिसाइडिंग ओवर द कोर्ट तेणु तांको कहयार थिला दे टुक ए स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेस जेस्टा कि स्पॉन्टेनिटी टा एठी नाही ओके ट्रांजैक्शन हैला किंबा इंसिडेंट हैला स्टैबिंग ऑफ द नेक आउ स्टेटमेंट दिया हैला किछि समय पर से जो दौड़ के आसला रूम भितरु से किछि गोटे कनकोट कर देथिबो स्टोरी ता मुंडरे किछि गोटे से भाबी देथिबो ओके the court presided by Chief Justice Cockburn ruled that the statement was inadmissible कौन legal reasoning से देले ता भाई continue the reasoning was that the statement was made after the event the reasoning was that
The statement was made after the event had concluded. After the event had concluded, and not during the commission of the act. And not during the commission of the act. Thus, failing to meet the criteria, not during the commission of the act. Thus, failing to meet the criteria for the res gesta exception. Thus, failing to meet the criteria for the res gesta exception. Continue. This is considered to be a narrow interpretation. तो ये जो रूलिंग टा देले ताकू जो लीगल स्कॉलर्स माने जूरिस्ट माने अछंती एटा को नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ रेस जेस्टा रूल्स हिसाब रे नेले. This is considered to be a narrow interpretation of the doctrine of res gesta. Okay. Emphasizing strict spontaneity. खाली हमें characteristics first characteristic contemporaneity and spontaneity. Okay, तो strict spontaneity माने कौन कि जेतेबेले एक्टा हेला इधर जस्ट तापरे किंबा से एक्टा हेला बळे ठीक अछि जेतेबेले ताको बेकरे से किछि अटैक कला सेति केबेले ताको कहबार थला से ताले हेइतांदा according to this narrow interpretation. Okay, taken by the Court of England, which was presided by Chief Justice Cockburn. Okay, तो एटा narrow interpretation आपण कहि परिए. तेनु केबे केबे क्वेश्चंस रे आसी जीवो एटा कि आर वर्सेस बेडिंगफील्ड एटा को इंटरप्रिटेशन आपनकर. ओके, और को टाइप रो नेचर थिला जजमेंट. Sir, इंटरप्रिटेशन ओके लिबरल इंटरप्रिटेशन तो एटा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन थिला. हां कोन तो sir, एटा तो डाइंग डिक्लेरेशन अगेंस्ट रे जाउची. it actually dying declaration dying declaration ro concept ta it varies from country to country. English law ro ame nei chu. Okay, the concept is that ki gote loko jetole se januchi or at least se bhabuchi ki moro death ta hochi to se michho kahiboni. ठीक अछि, गोटे मिछ को नहीं कि से तार भगवान को पाखे जाई कि पहुंचीबनी. राइट, बट से कांसेप्ट बहुत चेंज हो गलानी एबे. राइट, तो एबे कोन एबे कोर्स होरिका देखु जदी लॉट ऑफ अदर थिंग्स दे आर सीइंग कि डाइंग डिक्लेरेशन देला बेले ता स्टेट ऑफ माइंड कोन अछि से ठीक ठाक देई परिबो कि नहीं. ओके, से ता स्टेट ऑफ माइंड ही जदी ठीक नहीं डाइंग डिक्लेरेशन ताले ओके एडमिट न होई परिबो. ठीक अछि, तो एईटा कोन एई केस रे एटा द question was not on dying declaration. Right, the question was basically whether this particular thing okay ये जो circumstance टा कि तारा रूम भीतर अटैक हैला और से दौड़ी दौड़ी के आसी कि बाहर कहले कि ये मो संगे या कला. ठीक अछि, दिस इज आउ एमिति ना बहुत आउ केते गुडे केसेस जेतले हमें आउ टिके बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ केसेस. देयर इज वन पर्टिकुलर केस जो तरी कि गोटे इनकम टैक्स कमिश्नर कर रूम रे जने से तांका नारे नोटिस आस्तेला. एटा इंडियन केस हला आंध्र प्रदेश रे जाइए ताकर से कौन ताकर कथा हला रूम भीतर तो से आपण फिल्म्स रे भी देखथिबे एटा बहुत तरह सी बाहर को आसी कि ताकर सब ड्रेस फ्रेस चिप जाइतिला आ से आसी कि कहले कि ये मते असॉल्ट करिया पे चेष्टा करले. बुझि परले तो सो ए पर्टिकुलर केस रे द इश्यू वाज नॉट रिलेटेड टू dying declaration. It was related to whether this can be okay taken under, whether this proof can be taken under res gesta. That was the legal issue. Okay, dying declaration तो ठीक अछि जने तार डेथ होची एक्चुअली हे भी गला सी जा कहला सेटा dying declaration okay अंडर रे निया हबो. बट इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ भितर टिके डिफरेंस अछि dying declaration को नेकी
ଆମେ ପଢିଲା ପଢିବା ଆମେ इंडियन लॉ रे डाइंग डिक्लेरेशन ओनली ऑन बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन बहुत कम जगह रे कन्विक्शन हे परिबो ओके जदी कोलैटरल एविडेंस गुड़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस गुड़ा सब गोटे डायरेक्शन रे पॉइंट करछ ताहले हे परिबो ता माने कोन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैज टू एग्जिस्ट एही क्वेश्चन ता बहुत थरो बहुत गुडे स्टेट रो परीक्षा रे पडिछि कि केवल डाइंग डिक्लेरेशन को बेस करिकी कन्विक्शन हे परिबो कि नहीं ओके केवल डाइंग डिक्लेरेशन को नहीं की तो द थिंग इज दैट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जोटी हेची ओके बट सुप्रीम कोर्ट तार रूल्स फ्रेम करिसेंती कि को जगह रे डाइंग डिक्लेरेशन को केवल डाइंग डिक्लेरेशन को नहीं कि आपण कन्विक्शन करि परिबे ओके where all the pointers they point to one direction so circumstantial or corroborative evidence भी सेमती थिबा दरकार ठीक अछि तो so that will see but ए केस जदि हमें कहबा एठी डाइंग डिक्लेरेशन रो क्वेश्चन ही उठी नथला here the question was that कि रेस जेस्टा रो एक्सेप्शन रे ओके तो एथरे यू नो हियर से रो एक्सेप्शन रे एटा रेस जेस्टा अंडर रे जिवो कि नहीं ठीक अछि तो एथरे तांको कोर्ट कहले कि नहीं जीवनी they took a strict interpretation of you know the res gesta कि एटा स्पॉन्टेनिटी एथरे नथिला ठीक अछि से अटैक हैला गोटे जगह रे से आसी कहूचा गोटे जगह रे आउ टाइम टेम्पोरल और स्पेटल दीटा डायमेंशन थिला से टाइम भी तार ओके लॉस हेतिला राइट बट इंडियन कोर्ट्स जोटा हमें देखिबा अदर केस लॉस हमें देखिबा इंडियन कोर्ट्स ए स्ट्रिक्ट ओके पॉलिसी टाको फॉलो करंती नहीं खाली मु गोटे एग्जांपल देली मु 3 दिन आगु फोन करथिली आ हिटमैन को कहिथिली ए लोक को 3 दिन परे ए समय मार दो हिटमैन सेया कला ठीक अछि तो एबे कथड़ा हैला मोर जो 3 दिन आगु फोन आस्तिला सेटा क्लोजली कनेक्टेड की ओके जदि क्लोजली कनेक्टेड आ माने रेस जेस्टर पार्ट हबो कि नहीं ऑल द मु 3 दिन आगु त कहिथिली आ अलग जगह रो कहिथिली लंडन ठीक अछि सो दैट इज द थिंग तो इंडियन कोर्ट्स तार टिके लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं जेमती कि राव वर्सेस आंध्र प्रदेश रे आपण देखिबे ओके एटा बुझी परले केस लॉटा राइट हमर एक्चुअली आपण आउरी डिटेल्स ए केस ऊपर आपण सब टेक्स्ट बुक रे ए केसटा पूरा डिटेल रे देता है एग्जाम रे लिखिया पे किंतु हमको बेसिक जिंस जानियार अछि खाली रूलिंग टा लिखा जाय ओके कोन कोर्टा कहिचंदी अनलेस यदि गोटे पर्टिकुलर केस को आपण कोर्ट करिचंदी क्वेश्चन रे क्वेश्चन पचरा हिची अमुक केस रिलेटेड जहा कुहा हिची ता विषय रे एनालिसिस करंतु देन यू हैव टू गो टू द डिटेल्स ऑफ द केस आज जो आंसर राइटिंग आपनकर अछि ओके 5 तारिख रे टुडे आई जस्ट सेथरे गोटे क्वेश्चन सेंती अछि ओके आई जस्ट पुट द क्वेश्चन यू कैन नो एथरो देखंदु से जो गोटे क्वेश्चन अछि यार क्वेश्चन 3 टा देखंदु comment on the dynamic between section 162 of okay CRPC and section 165 of Indian Evidence Act with help of principle laid down in the case of Raghunandan versus State of UP 1974 ठीक है तो एटा क्वेश्चन ने जदी देथिबो ताहले से केस रो पूरा डिटेल्स आपको दवा पे पड़ियो तार किसी बैकग्राउंड भी जदी अछि दैट यू नीड टू गिव अदरवाइज नॉर्मली कोन केवल रूलिंग हमको लिखिबार थाए ओके कोड कोन कहिथिल बस सेति की हेले दैट वुड बी सफिशिएंट राइट सो ओके आर वर्सेस वेटिंग फील्ड समस्त बुझी परले तो इवन इन आपनकर जो क्लैट पीजी करी करे तो एटा हला स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रेस जेस्टर रूल्स ऑफ रेस जेस्टर स्पेशली the rule of spontaneity and contemporaneity okay
से तारी पूरा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कोर्ट तारा नेले गॉट इट तापरे एबे सेकंड केस को आसंदो दैट इज आर वर्सेस एंड्रयूज ओके आर वर्सेस एंड्रयूज सो टेक डाउन आर वर्सेस एंड्रयूज एटा 1987 नो केस So R versus Andrews, okay, 1987. So take down R versus Andrews. R versus Andrews is an important, or you can say landmark case. R versus Andrews 1987 is a landmark case under the English law, under the English law, which was given by, तो सेटा कोर्ट देथिले, ओके, एटा हाउस ऑफ लॉर्ड्स तांकर देथिले, given by the House of Lords. Okay, House of Lords. You know what is House of Lords? ଏବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲରେ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋଅର ହାଉସ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପର ହାଉସ ଅଛି, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭାଟା ଲୋଅର ହାଉସ, ରାଜ୍ୟସଭାଟା ଅପର ହାଉସ, କି ହାଉସ ଅଫ ପିପଲ ଲୋକସଭା, ଓକେ, ଆଉ କାଉନସିଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା, ଠିକ ଅଛି। ଏ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଲରୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲୁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ କଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅପର ହାଉସ ଆଉ ଲୋଅର ହାଉସ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଲୋକସଭା ଭଳିଆ, ଆଉ ହାଉସ ଅଫ ଲର୍ଡସ, ଓକେ, ଯୋଉଟା ଅପର ହାଉସ ତାଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସିସନଟା ଆର ଭର୍ସେସ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁସ, ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି କୋଉଠି ନା ହାଉସ ଅଫ ଲର୍ଡସ, ଓକେ। ସୋ ଟେକ୍ ଡାଉନ୍ facts आगे लिखନ୍ତୁ, facts of the case. First point, the defendant Andrews was accused of fatally stabbing the victim during a home invasion. During a home invasion. ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି କହୁଛୁ ଚୋରି ହୋ, ମାନେ ଚୋର ପଶିଗଲା ଘରେ, ଓକେ, ଆଉ ଘର ଲୋକକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କଲା, ଠିକ ଅଛି। The defendant Andrews was accused of fatally stabbing the victim during a home invasion. Next point, say facts under it. Shortly after the incident, neighbors contacted the police. Shortly after the incident, the neighbors contacted the police, who arrived promptly. Police jaldi पहुंच गला. Okay, shortly after the incident,
neighbors contacted the police, who arrived promptly. Upon their arrival, third point, facts. Upon their arrival, the victim made a statement. The victim made a statement identifying his attackers. Identifying his attackers. ହେଲା ତାପରେ ଇସ୍ୟୁ କୁ ଆସନ୍ତୁ. The central question was whether the victim statement whether the victim statement whether the victim statement made shortly after the traumatic event could be admitted as evidence under the res gesta exception to the hearsay rule. Under the res gesta exception to the hearsay rule. तापर देखंतु रूलिंग टा काहे की इंपोर्टेंट काहे के ना से जो जुडिशियल रीजनिंग टा देई चंती दैट इज मोर इंपोर्टेंट. ठीक अछि. द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैज गिवन ए प्रॉपर जुडिशियल रीजनिंग जोटा की जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन आपण देखिले आर वर्सेस वेडिंगफील्ड रे एठी इंटरप्रिटेशन टा टिके लिबरल अछि आउ स्ट्रांग लीगल रीजनिंग ऊपर अछि. से माने पांचटा पॉइंट्स पॉइंट आउट करछंती कि एही पांचटी पॉइंट पई आपणकर ओके आमे एडमिट करूछु एविडेंस सब एटा रेस जेस्टा अंडर रे जीवो. सो रूलिंग रे लिखंतु द हाउस ऑफ लॉर्ड्स upheld the admissibility of the victim's statement. The House of Lords upheld the admissibility of the victim's statement. Okay, as res gesta. It provided a structure for evaluating such evidence. It provided a structure for evaluating such evidence. Sir, first line. This structure, First line that the House of Lords upheld the admissibility of the victim's statement. Victim's statement. Okay. तापर लिखंतु it has 5 rules. It has 5 rules that is गोटे गोटे करी पांचटा लिखंतु. नंबर 1 dominance of the event. एटा कोन ए जो पांचटा रूल हाउस ऑफ लॉर्ड्स देले कि एमिति सिचुएशन जोटी आसुची ओके ताहले कोर्ट को कोन कोन एनालाइज करिवा कथा पांचटी पॉइंट रे कोर्ट को एनालिसिस करिवा कथा से पांचटा पॉइंट देइछथि. नंबर 1 डोमिनेंस ऑफ द इवेंट. ओके डोमिनेंस ऑफ द इवेंट.
है dominance of the event तर लेखन से dominance of the event अर्थ कौन the judge must assess whether the event was so unusual. The judge must assess whether the event was so unusual the judge must assess whether the event was so unusual okay so unusual that it dominated the thoughts of the declarant that it dominated the thoughts of the declarant माने सी पूरा आउ किछि भाबी ही पार नथला ओके एते शॉकिंग कि एते ड्रामेटिक थिला सेटा राइट माने से इवेंट टा टोटली डिक्लेरेंट रो थॉट्स को डोमिनेट कर दी सी आउ किछि भाबी ही पारनी तब ओके डोमिनेटेड द थॉट्स ऑफ द डिक्लेरेंट ताले सी जे आउ किछि भाबी पारनी ताले से हिसाब रे कहि दिबो भाबियार समय नहीं ओके कि समय थिले भी से भाबी ही पारनी कहना से एते शॉक्ड थिला कि ओवरवेल्म थिला ओके से आउ किछि भाबी ही पारनी resulting in an instinctive reaction भाबिया पाई मैनिपुलेशन पाई टाइम नथला ता पाखरे okay resulting in an instinctive reaction without the opportunity of fabrication or manipulation without the opportunity of fabrication or manipulation ओके एटा हला फर्स्ट जिंस जोटा कोर्ट को देखिबार अछि इवेंटा एते स्ट्रांग थिला अनयूजुअल थिला डिप्रेसिंग थिला स्टार्टलिंग थिला जा भी हो कि जे स्टेटमेंटा दउची ता मुंडो पूरा तारी ऊपर ही थिला आउ किसे भाबिबार कंडीशन रे नथिला जदि सेमती केस अछि ताले से ताकू से तो भाबी करे कंडीशन रे नथिला तेणु किछि गोटे मैनिपुलेशन गरिका करिवार चांसेस कम अछि ହେଲା ଏଟା ଫର୍ଷ୍ଟ पॉइंट से कहले सेकंड लेखंतु जोडा हमें तार देखिथिलु स्पॉन्टेनिटी एंड कंटेम्पोरेनिटी स्पॉन्टेनिटी एंड कंटेम्पोरेनिटी काली जो हमें रेस्ट जेस्टर फीचर्स रे भी एटा देखिछु ओके तो लेखन तरे the statement should be closely associated with the event the statement should be closely associated with the event indicating that the statement should be closely associated with the event indicating that the declarant's mind was still influenced by the incident
है तो स्पॉन्टेनिटी और कंटेम्पोरानेटी थिबा दरकार डिक्लेरेंट्स माइंड वाज स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंसिडेंट नंबर 3 जोटा कि आम देखिलु कि समय भी प्राय नथिबो किंबा समय थिले भी सी से कंडीशन में नथिबो भाबिबा पई फैब्रिकेट करिया पई मैनिपुलेट करिया पई नंबर 3 एक्सक्लूजन ऑफ फैब्रिकेशन exclusion of fabrication. The circumstances should be such that the circumstances should be such that the possibility of fabrication or distortion fact पूरा distort कर दो तापे भाबिया पड़ियो ना distortion or fabrication can be disregarded है तामाने कोन ना जहाँ से रिफ्लेक्स रे भाबिला सेटा से ओके कहूच आउ किछि मैनिपुलेशन करिया पे टाइम नता ए सेम प्रिंसिपल आपण बहुत जगह रे देखिबे आगु को हमें देखिबा नार्को एनालिसिस टेस्ट करिका नार्को एनालिसिस टेस्ट काई करे जे काई ना मनीषर जो रीजनिंग रो बुद्धिटा ओके द पावर टू रीजन ए गोटे मते क्वेश्चन पचारले मु केमिति आंसर करबी जेंति मते लाभ हो ठीक अछि मु हैरान रे पड़बिन तो तेणु मु सतटा को कहबिनी मु मो हिसाब रे कहबी कोन मते कहबार अछि आगुरु पॉलीग्राफ टेस्ट होतिला ओके लाई डिटेक्टर टेस्ट पॉलीग्राफ रे कोन होतिला ना ब्लड प्रेशर रो चेंजेस रे से मशीन प्रेडिक्ट करथिला बट सब एमिति क्रिमिनल्स बाहरले जो माने कि बहुत एजुकेटेड थिले कॉन्फिडेंटली मिछ कहले ब्लड प्रेशर किछि चेंज हलानी से मिछ कहथिबो एपडे पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर कहथिबो ये सत कहू ओके बेस्ट एग्जांपल्स तारो सब हेले चार्ल्स सोबराज को धरला परे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ओके नेपाल रो भी इंडिया रो भी तांको मुंडो एथि खराब थिला कि तो पॉलीग्राफ सेते बळे आ एते एडवांस टेक्नोलॉजी सब आसी नथला ओके तो सीए जहा कहूची तो सब सत बट आमे जानटू सत नुह करियो कोन तले मशीन खराब कॉन्सेप्ट भूल ओके सेमती नुह कथाटा हला टेक्नोलॉजी आस्ते आस्ते इफ यू हैव सीन काली हमें कि लास्ट क्लास से कोन गोटा में जो टेररिस्ट धराई थिला अजमल कसाब ता विषय कहतलु अजमल कसाब रो नाक्रो एनालिसिस टेस्ट थिला ठीक अछि तो सेठी भी देखो तो से कोन कोन कहूची सब केने रीजनिंग रो पावर नहीं मिछ कि गोटे ये कहि परिबन जहा कहबो प्राय सत्य बिकॉज रीजनिंग रो पावर हो रहलन एठी भी एग्जैक्टली सेही टाइप रो किछि जिंस आपण कोड देखुचंती कि रीजनिंग पाई तार समय नथिबो किंबा सी एते माने डोमिनेट थिबो इवेंटटा से किछि भाबी पार नथि बुझि पाले सो any kind of distortion or fabrication can be disregarded so that is exclusion of fabrication okay तापरे फोर्थ पॉइंट को आसंदो फोर्थ पॉइंट जोड़ा से कहले consideration of special features सेतरे सर्कमस्टेंसेस किछि एमते अछि सेटा भी कोड को देखिया पड़ियो सर से डिस्ट्रक्शन कहउछन ना डिसरप्शन कहउछन फैब्रिकेशन और से जो गोटे लाइन टे अछि फैब्रिकेशन और डिस्ट्रक्शन कहउछन ना डिसरप्शन कहउछन डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्ट करिया माने गोटे जिंस को बुलेई बालेई की प्रेजेंट करिवा ठीक अछि डिस्टॉर्ट DISTORTION distortion so distort means to change the original thing in a negative manner ठीक अछि हम कहू ना डिस्टॉर्टेड पिक्चर माने ओरिजिनल फोटो को ताको आपण एपट सेपट के डिस्टॉर्ट कर दोछ इमेज
ओके सेटा गोटे ओरिजिनल इमेज रो डिस्टॉर्टेड इमेज टीवी रे देखथिबे न्यूज रे बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंसिटिव पिक्चर गोटे एक्सीडेंट हिच सेठी गोटे डेड बॉडी टा पड़ी तो से माने कोन ताको डिस्टॉर्ट कर दियंती कवर मास्किंग कर दियंती ओके से टाइप दैट इज डिस्टॉर्शन DISTORTION डिस्टॉर्शन कंसीडरेशन ऑफ स्पेशल फीचर्स तमाने कोन जदि किछि गोटे स्पेशल सर्कमस्टेंस अछि दैट आल्सो द कोर्ट हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन एनी फैक्टर that might affect the reliability of the statement any factor consideration of special features consideration of special features तारी अंडर कंटिन्यू करिवो जोटा बे फोर्थ पॉइंट है पांचटा जिंस कहजन ना आज्ञा आर वर्सेस एंड्रयूज रे जो आपनकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स पांचटा जिंस कहजन तो एटा फोर्थ पॉइंट ता ताकर कंसिडरेशन ऑफ स्पेशल फीचर्स ठीक है कंसिडरेशन ऑफ स्पेशल फीचर्स any factor that might affect the reliability any factor that might affect the reliability of the statement such as malice or intoxication such as malice or intoxication such as malice or intoxication should be taken into account मोर प्रथमरु राग अछि जनक ऊपर ओके सच एज malice or intoxication should be taken into account मोर जनक ऊपर बहुत राग अछि ओके और तापरे मोर ए टाइप रो स्टेटमेंट देली तापरे तो एटा कोर्ट को देखिया पड़ियो आरो आगुरु इंटेंशन तो थिला आरो आगुरु कि ता ऊपर राग तो थिला ओके इंटॉक्सिकेशन मु ड्रग्स रे अछि कि अल्कोहल यू नो कंज्यूम करी जा भी करछि सेही इन्फ्लुएंस रे मु गोटे स्टेटमेंट दोछि तो सेटा को भी कोर्ट देखिया पड़िबो कि ये ठीक मेंटल कंडीशन रे हाई कि ओके स्टेटमेंट ता दोछि कि नहीं जोटा कि हमें रेस जस्ट अंडर रे एडमिट करि परिबो बुझि परले तो एंती कितरा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस रे कोर्ट हैज टू लुक एट ऑल दोस थिंग्स आल्सो जने इंटॉक्सिकेटेड अछि तो तारो सेंस ही नहीं तारो स्टेटमेंट को एडमिट करि होबो से जगह ओके तापरे लास्ट हैला इवैल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल एरर कि भूल हबार संभावना अछि कि जदि एटा ई जा कहूची ओके ताकू जदि हम एडमिट करिवु कि ये जो कथाडा कहूची ओके सो पॉइंट नंबर 5 टेक डाउन evaluation of potential error evaluation of potential error तो सेतरे लिखंदु evaluation of potential error ordinary human fallibility in recollection pertains to the weight of evidence ordinary human fallibility in recollection pertains to the weight of evidence not its admissibility हला से कोन गोटे भूल रे कहि दोची कोन करती एई टाइप रो जदी आपण कहउछन ओके
तो सेटा कौन से रिकलेक्ट करि पारनी ठीक रे तेणु एविडेंस टा टिके वीक एविडेंस हम बट दैट शुड नॉट अफेक्ट इट्स एडमिसिबिलिटी आपण एडमिट करंदु तापर ताको एते वेट देबेनी केना वीक एविडेंस ओके तार जदी आपन लागु कि से भूल कहि दउची कि यू नो ह्यूमन फॉलेबिलिटी हेई पारे से भूल कहूची बट एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस ऊपर सेटा रेजिस्टर अंडर रे कोर्ट एडमिट करिए कि नहीं कोर्ट को सेटा हबेर अछि ताको एडमिट करंदु किंतु एज अ वीक एविडेंस एविडेंस रो वेट टा ओके जदी आपन को लागु कि नहीं एटा चांस अछि लोकटा भूल कहूची ही इज फॉलेबल एज अ ह्यूमन ओके एरर से करि पारे राइट एई कॉन्टेक्स्ट रे डू यू नो देयर इज अ वेरी फेमस बुक ओके आउ आर्टिकल्स भी अछि ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऊपर कोन सुप्रीम बट नॉट इनफॉलेबल कि एटा कहिथिले कि लिखिथिले एनीवन हु कैन टेल मी सुप्रीम बट नॉट इनफॉलेबल गोटे जूरिस्ट महान जूरिस्ट गोटे कहिछन सेटा ओके लेखंतु आजिरो काली कहबे कोन देखि ओके काली मु दुटा क्वेश्चन पचार दिली गोटे तो हला कहली कि से केस ऊपर मते किछि कहबे देखि कि आसी सेटा राजनारायण केस टा ओके सो आफ्टर फिनिशिंग द क्वेश्चंस आई विल आस्क यू ओके राजनारायण केस के पढ़ी के आछथि सेटा मते कहबे ओके सो पोटेंशियल एरर जदि अछि जने भूली जाई छी कि टिके 100% ठीक कहि परनी तो ठीक अछि सो वीक एविडेंस हबो बट एडमिट करा हबा कथा it should not affect the admissibility okay तापरे सेही पॉइंट रे लिखंदु फिफ्थ पॉइंट रे however specific however specific factors however specific factors that could lead to error specific factors that could lead to error should be considered specific factors that could lead to error should be considered हला तेनु एटा गोटे मोर वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गला तो तापर नेक्स्ट लिखंतु माने एई पांचटा सरी गला ओके आर वर्सेस एंड्रयूज is considered to be more balanced R versus Andrews মানে ruling টা R versus Andrews is considered to be more balanced and wider in scope more balanced and wider in scope as compared to R versus Bedingfield as compared to R versus Bedingfield ओके बुझी परले एटा आपनकर दीटा इंग्लिश केस लॉस इंपोर्टेंट केस लॉस रिसेंट केस लॉस भी अछि बट सेटा इंग्लिश रो रिसेंट केस लॉस हमरो दरकार नै ओके दैट वी डोंट नीड डन एबे ए दीटा टिके 1 मिनिट नियंतु टेक 1 मिनिट go through it take 2 minutes and go through it okay I'll take a break for 2 minutes you go through it तापर हमें इंडियन केस लॉ दीटा देखिबा then we will go to the questions 10टा क्वेश्चन हमें सॉल्व करिबा ओके रिलेटेड टू रेस्ट डेस्टा आपण केते बुझिले कांसेप्ट ता सेथुर आपण जान परिबे तो जस्ट गो थ्रू इट एनी डाउट्स यू आस्क आफ्टर ए रिटर्न ओके जा लिखि जन थर थर देखन
ओके सो किसी डाउट अच्छे भितर ना नेक्स्ट पार्ट को जीवा इंडियन केस लॉज देखिए इंडिया रो लैंडमार्क केस लॉज रिलेटेड टू दिस ओके फर्स्ट लिखंतु लैंडमार्क केस लॉज रिलेटेड टू रेस्ट जेस्टा इंडिया रे ओके दैट इज जेंतेला विजय वर्धन राव ओके कि खाली आपण जीवी राव भी कहि परिबे वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996 रो केस एटा ओके द केस ऑफ 1996 ओके तो एथरे बहुत गुडे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुडा ऊपर डिस्कस करा हितला जेमति कि आपनकर जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओके तो ता ऊपर भी किछटा क्वेश्चंस थिला बट आमे जो हिसाब रे पढुचु आमे वी विल बेसिकली concentrate only on the part of rest tester ठीक है तो ता फैक्ट्स ता लिखो तो आगे point number 1 on March 8 1993 on एगुला ना जेतले आपण लिखिबे परीक्षा रे सब मार्च 8 ये से किछ दरकार नै डायरेक्टली आपण लिखियो बस रे ओके ए जिंसडा हैला बस सेति आउ किछ नै on March 8 1993 नॉर्मली क्वेश्चन पढे आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन पढिबे धरंतु ताले दीटा अंक लिखियो पड़िबो कि माने आपण इंग्लिश माने केसेस भी देबे और इंडियन केसेस भी देबे सेमती करके गोटे इंग्लिश गोटे इंडियन दे देले भलो सेटा केते मार्क रो क्वेश्चन रे आपन को एटा लिखियो पड़िबो केस लॉस गुडा को नॉर्मली केते मार्क रो क्वेश्चंस रे हमको केस लॉ दबा को पड़े 10 मार्क ऊपर हेले जस्ट खाली लिखा हो रूलिंग टा ओके अच्छा इन हां माने जदी गोटे क्वेश्चन टा पढ़ला एबे रिलेटेड टू रेस जेस्टा 10 मार्क रो सो आपण केस लॉ सेक्शन अंडर रे लिखिबे इन आर वर्सेस बेडिंगफील्ड ओके द इंग्लिश कोर्ट led by Chief Justice Cockburn okay took a rigid interpretation or narrow interpretation of the the concept of spontaneity okay तापरे whereas गोटे सेंटेंस से दीटा सरीबो काना हमर एते दरकार नै सबोला लिखिया ओके जदि 15 मार्क 20 मार्क 25 मार्क किंबा पचार थिबो आर वर्सेस बेडिंगफील्ड रे कोन हितिला तो से ताहेले आपण डिटेल्स दे नॉर्मली एविडेंस एक्ट क्वेश्चन नहीं एविडेंस एक्ट जो क्वेश्चन गुडा को यूजुअली पड़े आपण प्रोसीजरल लॉ रे 10 10 5 पड़े नहले 15 10 पड़िबो नहले माने 25 मार्क क्वेश्चन बहुत रे 25 मार्क क्वेश्चन प्रोसीजरल पेपर आसेनी तो सेही जो 10 10 5 रे 5 मार्क रो जो क्वेश्चन पड़िबो सेटा केते केते आंसर रही तो एविडेंस एक्ट आगे डिस्कस करथिले सेटा आंसर राइटिंग क्लास रे गोटे पेज लिखिया पे 6 मिनिट लागे 5 मार्क माने 5 मिनिट तेनो गोटे पेज भी आपण लिखि परिबेनी 3/4 ऑफ ए पेज रे सरीबो 5 मार्क रो क्वेश्चन ता आ 5 मार्क क्वेश्चन जदी गोटे पैराग्राफ जति कि माने बहुत अल्प लिखा हला आ मु एक्सपेक्ट करी 5 मार्क मिलिबो सेटा होबनी खाली मु सेया कहउतली देयर हैज टू बी ए बैलेंस बिटवीन कोन क्वांटिटी एंड क्वालिटी आपण क्वालिटी बहुत बढ़िया अछि किंतु 25 मार्क क्वेश्चन पाई आपण 2 पेज लिखछथि हाउ विल यू गेट द मार्क्स आपण जहां पॉइंट लिखछथि सब ठीक अछि बट आपणकर कंटेंट रो क्वांटिटी नाही
ओके ऑन द कंट्रारी 10 पेज मु लिखिकी आसी आडू साडू जहाँ इच्छा सब लिखी कि क्वेश्चन रे कौन पचार तार सागरे किछि लिंक नहीं मु कौन लिखी ओके सेठी जदि ठीक माने सेंस रे ओके लोक देखुची खाता इवैल्यूएटर ताहले 25 मते जीरो भी दे दी पारो 5 दे देकी छाड़ दे ठीक अछि राइट आ जदि भाग्य भल तो बहुत जण सेम देखंती एते लिखी जे दे दे 8 9 मार्क दे दे ठीक अछि सेमती भी पारे ओके जेतेबेले देखिबे 5 मार्क रो क्वेश्चन रे हमको लिखिबार अछि केस लॉस गोटा को दबार अछि 5 मार्क्स रे ना नहीं डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कौन पचारते हो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेस्ट डेस्टा ताहले आ सेठी आपण को गोटी लाइन रे जहा दवा कथा देबे ओके लैंडमार्क केस लॉस इंक्लूड आर वर्सेस बेडिंगफील्ड एंड आर वर्सेस ओके एटा लेके देले आपण को एंड्रयूज एंड इन इंडियन केस लो एतिकी बस गोटी लाइन रे सरला आ तार हमर समय नहीं दबा पई व्हाट इज द यू नो जजमेंट एंड ऑल सेगुड़ा 10 मार्क 15 मार्क और पूरा एनालिसिस जो फैक्ट फैक्ट देबी सेगुड़ा 15 मार्क्स अबो ओके सो ठीक है लिखंदो एटा फर्स्ट है फैक्ट्स लिखंदो on March 8 first point facts on March 8 1993 a super express bus on March 8 1993 a super express bus traveling from Hyderabad to Chilakaluripet CHILA KALURIPET Chilakaluripet was set ablaze okay तो के निया लगे दला was set ablaze near a railway level crossing at Nara Saraupet NARA SARAOPET Nara Saraupet एगुड़ा ना किछि लिखिया दरकार नहीं परीक्षा एतिकल लेखा हो बस पड़ा हैला एतिकी लोकंकर डेथ हैला रिजल्टिंग इन एतिकी लोक न लिखले भी चलिबो नारा सराउपेट resulting in deaths of 23 passengers and severe injuries to others. Okay. सर The appellants. सर टिके स्टार्टिंग रो उतरे रिपीट कर दे फर्स्ट पॉइंट लिखंतु ऑन मार्च 8 1990 एटा आपण नोट्स ता बनौचंती तो मु सेत पे डिटेल्स ला दोची परीक्षा रे सबले मन रखियो जेंति कि आर वर्सेस बेडिंग फील्ड रो तार जदी हम डिटेल लिखे तार भी सब अछि तार डेट अछि सी ताकर माने रिलेशन ता केमिति स्टार्ट हैला कोन प्रॉब्लम्स थिला ये को डेट रे जाई कि कंप्लेन देथिला गुरु ओके बिफोर शी डाइड से को दिन जाई कि कंप्लेन देथिला सेगुडा सब अछि बट सेगुडा एते हमर दरकार पड़ेनी परीक्षा तो टोटली दरकार पड़ेनी ओके बट एठी मु जेतो आपण नोट्स ता बनौचंदी तो नोट्स ता गोटे पूरा प्रॉपर नोट्स हे कि रहइबो सेति पई ए जिंसोडा मु कहि दउछ फर्स्ट पॉइंट लिखंतु फैक्ट्स अंडर रे ऑन मार्च 8 1993 ए सुपर एक्सप्रेस बस traveling from Hyderabad to Chilakaluripet was set ablaze माने निया लगाया गला से near a railway level crossing at Nara Saraupet okay NARA SARAOPET Nara Saraupet resulting in the deaths of 23 passengers and severe injuries to others. Resulting in the deaths of 23 passengers and severe injuries to others.
second point say facts under the appellants Vijayavardhan Rao, the appellants Vijayavardhan Rao and Chalapati Rao, the appellants Vijayavardhan Rao and Chalapati Rao were accused of executing this act, with the intent to rob passengers. With the intent to rob passengers. ହେଲା ନିଆ ଲଗେଇକି ଲୋକମାନେ ଡର ଯିବେ କରେ ତ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବେ ଡକାୟତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବେ ଜିନିଷ ସବୁ ଓକେ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ତ ଚୋରି ହବ ରାଇଟ୍ ସୋ with the intent to rob the passengers. Okay. Next point. The trial court convicted both appellants. 23 ଜଣ ମରିଗଲେ ନା The trial court convicted both appellants. The trial court convicted both appellants, sentencing them to death. Sentencing them to death, which was upheld by the Andhra Pradesh High Court. Sentencing them to death, which was upheld by the Andhra Pradesh High Court. The trial court tanku death penalty dele agu jaiki seda okay it was confirmed by the High Court. ठीक है Andhra Pradesh High Court. तो एमाने ताले गले Supreme Court को okay. Subsequently, the appellants appealed to the Supreme Court. Subsequently, the appellants appealed to the Supreme Court. Okay. Tapare issues. Issues actually ethare bahut ach. Lot of issues were there. Major fundamental dita issue thila ei case re gote to res gesta upare thila ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ ରେୟାର ଡକ୍ଟ୍ରିନ ସେଇଟା ମୁଁ ଓମିଟ କରିଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ ରେୟାର ଡକ୍ଟ୍ରିନ କୁ ଯିବା ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ ରେୟାର ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ବୋଲି କହିହବନି ଓକେ ଅଦର ମେଜର କେसेस आर देयर बट सेंट्रल क्वेश्चन दीटा थिला एथरे ओके एंड अदर एंसिलरी क्वेश्चंस वर देयर सो आई विल ओनली स्टिक टू रेस्ट जेस्टर सो लीगल इश्यूज और यू कैन से इश्यूज ऑफ द केस there were two principal central issues. There were two principal central issues and numerous ancillary issues. And numerous माने बहुत गुड़ाए and numerous ancillary issues. Ancillary माने side issues. ठीक अछि एटा जदि मेन हैला तो side issues बहुत गुड़ा थिला. The principal issues were point 1 admissibility of statements under res gesta. Okay, तो तारो explanation तो कौन ना ये तो निया लगेले admissibility of statements under res gesta. Okay, ये जो निया लगेले जो माने इंजर्ड हे जंदी जो माने बंची गले आउ जो माने को डेथ माने समस्त 23 जन सेठी मरि गेलेनी ओके बहुत जन हॉस्पिटल रे भी तंकर डेथ हला जायकी तो तंकर स्टेटमेंट भी नहीं तेणु सेगुडा सब जो स्टेटमेंट इंजर्ड लोकंकर जे बंची गले सेगुडा सब रहला ताकू रेस जेस्टा अंडर रे एडमिसिबल हबो कि नहीं सब ओके सो तार दी लाइन लेखन तो ऊपर द प्रोसिक्यूशन sought to admit statements
made by victims, the prosecution sought to admit statements made by victims after the incident as a part of the same transaction invoking section 6 of IEA, Indian Evidence Act, as a part of the same transaction invoking section 6 of IEA. The key issue was whether these statements were spontaneous. The key issue was whether these statements were spontaneous and contemporaneous enough, whether these statements were spontaneous and contemporaneous enough to be considered part of res gesta. To be considered part of res gesta. ହେଲା ଆମେ ଆରି संगे ଡିଲ୍ କରିବା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଥିଲା ओके नेक्स्ट पॉइंट लिख दियंतु the other principal question or principal issue dealt with application of rarest of rare doctrine. Dealt with application of rarest of rare doctrine. Okay, so सेटा we will not go into that. Okay, but जानी थांतु सेटा सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कले ताको ठीक अछि तो 23 जन लोकंकर डेथ हैला आ बहुत ही गोटे माने ग्रुसम टाइप रो क्राइम तो इट वाज अपहेल्ड. ओके अरेस्ट ऑफ रेयर अंडर रे आसुची तो डेथ पेनल्टी ताकर. ओके दैट वाज यू नो सुप्रीम कोर्ट भी सेटा एग्री कले ठीक है रिलीफ मिललान ताको. आमे किंतु देखिया कि ना आमे पढु जेटा रेस्ट जस्ट अंडर रे ठीक है. तो नेक्स्ट लेखन तो ruling first point on res gesta जोटा first fundamental question थिला first fundamental issue थिला on res gesta. The Supreme Court emphasized that for statements to be admissible, the Supreme Court emphasized that for statements to be admissible under section 6 they must be spontaneous. Section 6 they must be spontaneous and made contemporaneously with the event or immediately thereafter. Contemporaneously with the event or immediately thereafter. In this case, the statements were made after a significant interval. In this case, the statements were made
after a significant interval following the incident. Providing sufficient time for potential fabrication. Providing sufficient time for potential fabrication. Okay, in this case, statements were made after a significant interval following the incident, providing sufficient time for potential fabrication. Therefore, Supreme Court ruled these statements. Therefore, Supreme Court ruled these statements inadmissible under res gestae. Ruled these statements inadmissible under res gestae. Okay. ଆଉ ସେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଉପରେ ସେଇଟା କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଏରେ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ ତା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁନୁ ବଟ୍ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେୟାର କେସ୍ ମାନିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ହିଁ ସେଇଟା ଓକେ ଯାହା ହାଇକୋର୍ଟ କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ରଖା ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓକେ ବଟ୍ ସେଇଟା ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟିରେ ପଡିବ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟିରେ ବି ଏଇ କେସ୍ଟା ସେମିତି କିଛି ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହଁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସୋ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାମାନେ କଣ ନା ଯଦି ସେଟା ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କି ଇଭେଣ୍ଟ କି ଅକରେନ୍ସଟା ହଉଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ହେଲା ଭିତରେ କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତା ଛଡା ଅଲଗା ଇଏରେ ସେଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଓକେ ଜେନେରାଲି କୋର୍ଟ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ ସୋ ଜଷ୍ଟ ରିଡ୍ what you have written and if you have any doubts ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ ताले लास्ट सेकेंड इंडियन केस अभी देखी दियंतु दैट इज सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1999 रो केस एटा ओके सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ओके so either because the admissibility of statements whether certain statements okay can be admissible in this particular case should they be admissible under doctrine of res gesta okay so first lekhandu facts point 1 on April 17 1978 on April 17 1978 in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, on 17 or April 17, 1978, in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, the appellant Sukhar was accused of shooting his nephew Nakal. The appellant Sukhar was accused of shooting his nephew Nakal due to prior enmity over land disputes. Shooting his nephew Nakal due to prior enmity over land disputes. Next point, the incident occurred on a public road. The incident occurred on a public road, and upon hearing the gunshots, several witnesses
including Pitam, जे है PW2, prosecution witness number 2. Okay, तो PW2 अपन लिख परिए, including Pitam, PITM, Pitam, PW2 arrived at the scene. Arrived at the scene. Next point, say facts. Nakal informed these witnesses. Nakal informed these witnesses that Sukkar had shot him. Okay, that Sukkar had shot him. Next point. That Sukkar had shot him. ताको गुली मार देला. Okay. नकल छड़ा कहला कि अन्य माने जो सब पहुंचले आसी इंक्लूडिंग पीतम जे हला प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2. ओके कि ये मते गुली मार देची. राइट. नकल कहला कि सुकर मते गुली मार देची. ओके. So Nakal informed these witnesses that Sukkar had shot him. Next point, say facts. Subsequently, Nakal was taken to police station. Subsequently, Nakal was taken to police station. Where he filed a FIR. Where he filed a FIR. Giving details of the incident. Filed a FIR giving details of the incident. Next point. During the trial, Nakal passed away. During the trial, Nakal passed away from unrelated causes. From unrelated causes. माने ये सुकर तक गुली मारथिला सेत पे तार डेथ हला नी अलगा रीजन पे तार डेथ हला ट्रायल चलथिला बेडे ओके ड्यूरिंग द ट्रायल Nakal passed away from unrelated causes. Next point. The additional session judge convicted Sukkar. The additional session judge convicted Sukkar under section 307 of IPC. जो मैंने पढ़ी चलती already 307 कौन IPC रो? What is 307? Section 307 of IPC. The additional हाँ कौन? punishment for murder थिला बोले. The additional session judge convicted Sukkar under section 307 of IPC for attempted murder. For attempted murder, sentencing him to 5 years of RI, rigorous imprisonment. Okay. Sentencing him to 5 years of RI, rigorous imprisonment. Okay. Conviction कहाँ ऊपर आई थी? Next point. The conviction was primarily based on the FIR. The conviction was primarily based on FIR, comma, statements made by the victim, statements made by the victim, and the testimony of Pitam. देखिए prosecution witness number 2 थिला. Statements made by the victim and the testimony of Pitam within bracket PW2. Testimony of कौन कहले? The testimony of Pitam.
PITM पीतम है हमारा प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 PW2 ओके तापरे नेक्स्ट पॉइंट से फैक्ट्स अंडर एरिया में लिखुछु द Allahabad High Court upheld this conviction on appeal the Allahabad High Court upheld this conviction on appeal तापर आसंतो इश्यूज upheld the conviction on appeal on appeal. तो एडिशनल सेशन जज करो कन्विक्शन पर से हाई कोर्ट को गला हाई कोर्ट तक ओके अपेल कले तापर से सुप्रीम कोर्ट गला तो ये जो सुप्रीम कोर्ट कोन कहले सेटा हमें ए केस रे सेटा देखो सो इश्यूज रे लिखंतो इश्यूज ऑफ द केस there were two central questions or central issues there were two central issues in this case number 1 admissibility of statements under res gesta हमें और ऊपर कंसंट्रेट करिया admissibility of statements under res gesta ओके लेखंतु कौन से डिफेंस कौन कहला विषय the defense challenged the admissibility of the victim's statement the defense challenged the admissibility of the victim statement of the victim statement to Pitam PW2 okay so eta first legal admissibility of statement under res gesta right victim's statement to Pitam under section 6 of Indian Evidence Act under section 6 of Indian Evidence Act questioning whether these statements were part of the same transaction questioning whether these statements were part of the same transaction and thus constituted res gesta ओके एटा फर्स्ट क्वेश्चन थिला कि से जो ओके नकल जो कहिला पीतम को ओके कि ये मते मारी छी ओके सो सेटा रेस जेस्टा अंडर रे जीवो कि नहीं ओके कहीं ना तारी ऊपर रिलाय करी कि आपनकर लोअर कोर्ट्स करिका एडिशनल सेशन जज को कोर्ट से कन्विक्ट करथिले सुकर को और सेकंड क्वेश्चन ता लेखंदो सेटा ता ऊपर हम डिस्कस करबानी बिकॉज़ सेटा इंटरेस्टेड विटनेस रिलेटेड रिलायबिलिटी ऑफ सेकंड क्वेश्चन ता हला सेकंड इशू ता रिलायबिलिटी ऑफ टेस्टिमनी फ्रॉम एन इंटरेस्टेड विटनेस के जे इंडिपेंडेंट नुह तारो से केस रे कि से जो लोक मानको संगे रे पार्टीज को संगे रे किछि रिलेशनशिप अछि
तो सी हैला इंटरेस्टेड विटनेस ये रिलेटेड थिला ओके दी जन को संगे राइट तेणु ये इंटरेस्टेड विटनेस थिला तेणु इंटरेस्टेड विटनेस रो रिलायबिलिटी ताडू गोटे टेस्टिमोनी आछि तार केते रिलायबिलिटी हबो ऑल्दो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेस जस्ट तेणु एटा हमें डिटेल्स रे जीवानी जस्ट खाली लिखि दियंतु जेतु दीटा क्वेश्चन थिला ओके reliability of testimony from an interested witness okay tapare come to the supreme court ruling so judgment lekhantu the supreme court observed that victim statement to pw2 pitam victim statement to pw2 pitam was made immediately after the incident se guli marla ये पार्टिकुलर चिलेला लोक माने से साउंड सुनी गुली रो पळे असले तापरे कहला से मते गुली मारची बोली okay so immediately after the incident hala okay the court observed that victim statement to pw2 pitam was made immediately after the incident comma forming part of the same transaction therefore it was deemed admissible under section 6 of evidence act it was deemed admissible under section 6 of evidence act okay तो सेटा हमें तो एडमिट करा हला त ओके रेस जेस्टा भितरे जीवो एडमिट करा हला किंतु सेकंड क्वेश्चन टा जोटा सेटा लिखिया दरकार बिकॉज़ आपण खाली जानि थांतु जोटा जो पीतम रो ओके तारो जो एविडेंस तारो जो स्टेटमेंट ओके तारो टेस्टिमोनी ऊपर कन्विक्शन हेतिला गुरु से कन्विक्शन टा सुप्रीम कोर्ट ओके ताकू बेसिकली सेट असाइड कर देले कहीं ना जेतले एनालिसिस करा हला पीतम वाज ए इंटरेस्टेड विटनेस से दी जण को संगे ताकर रिलेशन थिला आरो टिके एनिमिटी थिला आगुरु की झगड़ा गोड़ा हेतिला लैंड डिस्प्यूट एंड अदर बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट्स थिला ओके सुकर संगे तेणु सुप्रीम कोर्ट कहले कि जदि कॉरबोरेटिव एविडेंस नहीं केवल आपण जे इंटरेस्टेड विटनेस केवल तार टेस्टिमोनी ऊपर इट इज वेरी रिस्की टू कन्विक्ट ओके तेणु कन्विक्शन टा सेट असाइड करा हे गला ओके जोटा की हाई कोर्ट भी ताकू ओके एग्री करथिले आउ सेशंस कोर्ट ताकू जा पनिशमेंट ताकू देथिले कन्विक्ट करथिले सो सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न दैट वर्डिक्ट ओके बट आमे जो बेसिकली कहूँ जोटा है ना रेस जेस्ट आमे तारी ऊपर कंसर्न अच्छु ना एबे इंटरेस्टेड विटनेस एंड ऑल दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ तेनु सेथरे इट वाज एडमिसिबल रेस जेस्टर ओके अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टर जने जन को गुली मारला साउंड सुनी कि लोक बाहर को पळे आसले जहा को गुली बाजिला से कहला कि ये मते गुली मारले तो सेटा रेस जेस्टर अंडर रे जीवो हमको सेटा जानिबार अछि बुझि परले सो this is basically the two important case laws now we will go to the questions ठीक है already it's time ठीक है जल्दी करिवा I'll give you 30 seconds okay for each question देखिए मते आंसर कहबे okay and that you can मु भी आपन को तापर करेक्ट आंसर ता कहि देबी only on rest gesture concept हमें देखिलु किछटा इजी क्वेश्चन किछटा ठीक है relatively tough question that we will see so let us start question 1 to start करिवा okay I'll just read the question options जोड़ा अपन देखिबे
Another question 1. Which of the following best justifies the admissibility of res gesta statements in evidence law? पढ़ंतु चारटा जाक ABCD. जाकू आंसर टा लागुची, just tell me what is the answer. सर ए ऑप्शन ए सर होगी. A. बाकी others, A, what is sir. the answer? A. समझते. Okay, so A will be the correct answer. Then come to question 2. Which of the following would most likely fall outside the scope of res gesta despite being related to the main event? ହେଲା ଚାରିଟା ସିଚୁଏସନ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରୁ ରେସ୍ ଜେଷ୍ଟା ର ଡୋମେନ୍ ବାହାରେ କୋଉଟା ଆସିବ? ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ. डी सर. Yes, others? आफ्टर फ्यू आवर्स भी ହେଇପାରେ सर बीटा. Which of the following most likely fall outside the scope? ରେସ୍ ଜେଷ୍ଟା ହବନି. Most likely ଯଦି ଦିଟା କି ତିନିଟା ଲାଗୁଛି କି ଦିଟା ତିନିଟା ଠିକ, ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଉଟା ହବ? So सर ए बी ହେଇପାରେ. yeah, B will be the correct answer. ठीक है, victim statement made to police after a few hours. ठीक है, after a few hours तो हमें कौन कहलु ना, either से incident बेले हवा कथा किंबा immediately afterwards हवा कथा, ये few hours देखी कोच. Okay, so एटा ता बाहरे पड़िबो, right? Most likely सेटा से कोची, तेणु केते जगह रे कौन हबो ना, more than one answers आपन को ठीक लागिबो. Okay, so in that case जोटा की सबुटु strongest अछि, you have to choose that, right? Now come to question 3. Which of the following best illustrates the same transaction concept under res gesta? Yes, कौन बेटा? Which of the following best illustrates the same transaction concept? More than one A. answers can give you the transaction, but which is the best illustration? ए आई थिंक सर. बी होगी. A. बी How होगी. organizers? बी होगी. Statements made by multiple witnesses who arrive at the scene much later. Okay, much later तो हबनी. सर बी टा ହେଇପାରେ कि statements made before, during and after the act. Before, during and after the act that form an integrated whole. Okay, जितने options अच्छी, media reports covering incident in real time. ठीक है, subsequent statements made by police station recounting the incident. ठीक है, so आ भितरे आपणकर B will be the correct answer. Okay, best illustrates the same transaction concept, right? तापरे 4 टा देखंदु. Which statement is most accurately describes the reason why res gesta is considered a hearsay exception? कौन पाई आपण को आपण ताको exception to hearsay कहउछन? Just see. So B. B. D. सी सर. B. B. Sir B. B for Bravo. Yes. Sir.
Because spontaneity and lack of time for reflection ensures reliability. That is correct. Right. तापरे सर एटा विक्टिम आईविटनेस मानकर ताले किछि रहिलानी ये रहिलानी इंटरेस्ट रहिलानी सर कौन कहले से क्वेश्चन पचारुची कौन पाई रेस डेटा को आपण हियर से एविडेंस गोटे एक्सेप्शन नौचन ओके तेणु जिनसटा है सेठी ऑल्दो जने निजर परसेप्शन रे निजे परसीव करनी जिनसटा कि का गुली मारती से देखिनी किंतु जस्ट गुलीर साउंड सुनिकी से बारे आसी पहुंचला ओके सो बिकॉज इट्स the spontaneity and lack of time for reflection माने भाबिबा पई समय नाही गुलीटा सुनली जाय कि बाहर पहुंचली देखला लोगो कोन गोटे चलची ओके आउ सेही जिंस मते आउ से लोक जदी मते कोन स्टेटमेंट गोटे दउची ताको भी सेंती टाइम मिलनी मु संगे संगे जाई पहुंचली इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ओके तेनो लैक ऑफ टाइम एंड स्पॉन्टेनिटी इट विल एंश्योर रिलायबिलिटी तानी किछि भाबी की माइंड रे किछि कर ओके सो एठी कोन क्वेश्चन पचर थिला मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स तो एगुडा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उडा आपन को सेही हिसाब रे देखिया पे पड़ी ओके सो बी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 5 को आसंदो why might a reflexive emotional outburst माने इंसिडेंट बेले कि ता परे ओके गोटे जोटा कि इनवॉलंटरी रिएक्शन ओके इमीडिएटली फॉलोइंग एन इवेंट बी एडमिसिबल अंडर रेस्ट टेस्ट काहे कि ताकू कोर्ट कहंती कि जदी सेमती हैला ओके जोडा हम कहलु ओवरवेलमिंग इफेक्ट तार हबो ओके ताले काहे कि सेटा एक्सेप्ट करा हबो व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सेप्टिंग सर ए किंबा सी हो ए हो बोले ऑप्शन ए एट सी सर सर ए की सी yes a would be the okay correct answer कौन पाई a reflexive emotional outburst काहे कि admissible होबो रेस्ट टेस्ट अंडर रे because such reactions reflect a truthful instinctive response to the event जोठी कि आपण किछि भाबी नांती आपण भाबिवार समय नाही ओके सो लेट्स से अलगा जो ऑप्शंस उडा अछि ओके सेगुडा कंफ्यूजिंग अछि बट मोस्ट एप्रोप्रिएट विल बी ए किना किछि कॉन्कोटेशन किंबा किछि डिसेप्शन किछि मैनिपुलेशन करिया पे समय आपनकर नाही ओके such reactions reflect a truthful instinctive response to the event जदि भी तापे टाइम थिबो से एते ओवरवेल्म हो जाई से इवेंट रे से इवेंट छडा और किछि से भाबी परनी ओके सो because emotions are always reliable indicators of guilt or innocence motor no hardened criminals जो माने cold blooded criminals के चार्ल्स सोबराज कथा कहउतिली से माने टोटली इमोशन न थे ओके because it allows the court to understand the mental state of the accused emotional outburst mental state of the accused hele bhi but admissibility sangare okay taro relation kichi nahi because every emotional statement is included under res gesta by default no certainly not okay कहीं ना तार स्टेट ऑफ माइंड कौन अच्छी से ठीक अच्छी कि सपोज जने इंटॉक्सिकेटेड अच्छा ड्रिंक कर देछन से तापर इमोशनल स्टेटमेंट तापर दउछन बहुत गुडे सिगुडा कोन हमें एडमिट करिवे कोर्ट एडमिट करिवे राइट सो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस ए इज द मोस्ट प्रॉपर because such reactions reflect a truthful instinctive response to the event 6 question to which of the following is not an essential factor in determining whether a statement qualifies under res gesta ए कौन होगा देखो Six, ऑप्शन no? ए ऑप्शन ए yes all of you that is correct a would be the correct answer okay tapare let us go to question 7 why is a statement made during a heated altercation more likely to be admissible under res gesta heated altercation पूरा रागरे दी जण पाटुंड करछन ठीक अछि हीट ऑफ द मोमेंट रे कोन होय आपण भाबी परिबेन जिनटा जहां इंस्टिंक्ट आपण सेया करे राइट से जिसरा पहुंचो तो व्हाट विल बी द आंसर जस्ट गो बी थ्रू द ऑप्शंस
बी सर। ऑप्शन डी। बी सर। Yes, that is correct. B will be the answer. Okay, answer টা তারা B হবো। Because at the heat of the moment removes the opportunity for fabrication. ଭାବିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ସପୋଜ କିଏ ଗୋଟେ ମତେ କଣ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଖରାପରେ କହିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନି। ଓକେ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ ବି କି ଗୋଟେ ଚଟକଣା ବଜେଇଦେଲା, ବି ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ଓକେ ତାକୁ ବାଡେଇ ଦେଲା କଣ କଲେ, ରାଇଟ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଉ ସେଟା ଭାବିବାର ସମୟ ତା ପାଖେ ନଥାଏ, ରାଇଟ। Question 8 को आसନ୍ତୁ, which of the following scenarios would least likely qualify under rest gesta? माने बी एटा संभावना सबुठु कम कि एटा rest gesta अंडर रे जीवो। बी सर। B, सर ऑप्शन बी। all of you? That is correct. Okay, a woman describing the incident calmly to police 2 hours later. 2 घंटा ପରେ ଆଉ calmly ଜଣେ କେତେବେଳେ ରହିବ, ସେ ଭାବିକି କହୁଛି ନା। काम जने केमती रही पारे, आपण इंस्टिंक्ट टाकू जदी कर्व करिवे ताहले आपण काम रहिबे, राइट। इंस्टिंक्टिवली आपण ओटे काम करछन जदी केबे भी काम रही परिबे। से इंसिडेंट रे जहा हिची भलो खराब आपण को मूड ता से हिसाब रे रहबे। जने जेहेतु निजरो मेंटल फैकल्टीज को कंट्रोल करी की रखिची ताहले ओके से कामली कहूची, सेटा नंबर 1। सेकंड जिंस हला 2 घंटा परे कहूची, इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट नुह, तणु से हिसाब रे भी इट विल least likely it will qualify. Least likely it will qualify. Now come to question number 9. ମୁଁ क्वेश्चन नंबर 8 टा टिके मिस कर देली, त आंसर तो कोन होबो? Question number 8 ta would least likely okay qualify under rest gesta, तो एटा B होबा आंसर। A woman describing the incident calmly to the police after 2 hours. After 2 hours, तो कामली से कहूची माने से भाबी की कहूची। ओके, नंबर 1 सेत पय होबनी। सेकंड हला 2 घंटा परे कहूची, तेनु कंटेम्पोरेनिटी और स्पॉन्टेनिटी और इमीडिएटली ओके बिफोर आफ्टर द इंसिडेंट सेटा रहउनी हमर। Question 9 को आसंतु, in which of the following cases would the doctrine of res gesta most clearly apply? Most clearly, सेटी least clearly कहि देला, ओके इट बी most clearly। सर हां ऑप्शन कौन हला? बी सर। सर बी ऑप्शन। Before bravo, okay ब्रावो। यस यस। okay, B is correct, ठीक है सर। B टा ही होबो ऑप्शन आपनकर, that is the correct answer। A spontaneous exclamation by the victim during the crime, that is correct। तापरे लास्ट क्वेश्चन को आसंतु, how does res gesta maintain reliability despite being hearsay? ओके, रिलायबिलिटी एटा फर्स्ट क्वेश्चन को बुल्ले की पकै छी, ऑलरेडी ये क्वेश्चन टा अछि आपनकर। ओके, सी ऑलरेडी आपण आंसर करछन। व्हाट विल बी द आंसर? सी सर। सर ऑप्शन सी। Yes, that is correct. Okay, C will be the answer. C for Charlie. ठीक अछि, C is the answer। तेनु फंडामेंटल क्वेश्चंस गुला थिला, whether you have understood the question or not। आउ तापरे you will also see रेस्ट जेस्टर क्वेश्चंस जोड़ा परीक्षा रे पड़ीची डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो, सेटा ऑलरेडी डेली आंसर राइटिंग बैच रे अछि, ताकू जाई कि देखि देबे। ओके, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रो, ओके सेटा नवंबर रो स्टार्ट हेतला लास्ट ईयर रो, सेठी देखि देबे तार पूरा डिटेल्स रे क्वेश्चंस रो दिथिबो विद द मॉडल आंसर, ताकू देखि देबे सेही पार्ट ता जो पार्टोडा सरुची तार कौन कौन लिखा है, कौन कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब अच्छी ऑलरेडी इट इज देयर। सेटा हला जो अच्छी आपन डेली आंसर राइटिंग गोटे फोल्डर अच्छी, से डेली आंसर राइटिंग फोल्डर को जिबे, सेठी मास हिसाब रे रखाई सेटा। ओके,
मंथ बाय मंथ रखाई आज जमती जो पीडीएफ टा देखुली आज जोटा क्वेश्चन थिला सेटा हला आपनकर दैट इज बेसिकली डीलिंग विथ 135 रो 166 ऑलमोस्ट सॉरी आसिलानी हमर आउ चारि पांचटा क्लास रे पूरा एविडेंस एक्टा इंपोर्टेंट सेक्शन वाइज माने सेक्शन पूरा आपनकर फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत सब कवर है सेक्शन वाइज आउ चैप्टर वाइज ता बाहर आउ कुछ क्वेश्चन आसी जिवाउ सेतरे एनालिटिकल क्वेश्चन भी अच्छी थियोरिटिकल क्वेश्चन भी अच्छी तो बोथ आपण देखंतु ओके काना गोटे गोटे हम सारी के जाउछु तेनु से क्वेश्चन सुडा आपण देखि परिबे प्लस ओजेएस रो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस भी देखि परिबे जोडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोल्डर अंडर रे अछि सेडा भी देखि परिबे ओके सेडा खोजिया पड़ी सब थर यू नो ओपन करो को वर्ष रो पड़ी रेस टेस्ट ऊपर बट डेली आंसर राइटिंग रे गले कोन से सेक्शन वाइज अछि तेनु सेकंड की थर्ड क्लास रे आसी जो सेक्शन 6 तो सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट हला सेक्शन 6 तो देखि देबे सेटा कोन कोन क्वेश्चन सब पड़ची सेक्शन 6 ऊपर दैट यू कैन ट्राई कुछ बल सो वी विल स्टॉप हियर देन एनी डाउट्स एनीथिंग यू वांट टू आस्क देन यू कैन आस्क एल्स विल स्टॉप थैंक यू सर। थैंक यू नमस्कार ऑल ऑफ यू थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सर, नमस्कार।